there was a signal problem on the other side, so I changed my place. Hopefully you can hear me now. Okay, so let me tell you all the things first in maybe 5 minutes, and then we will proceed for and okay. So first of all, for me, जो टेस्ट डेट थी इट वाज 3rd of March. तो मुझे नॉमिनेशन लिस्ट जो इनिशियली HEC की तरफ से आपको रिसीव हो जाएगी विद इन अ फ्यू डेज, वो मुझे 27th of March इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग का लेटर रिसीव हो गया था फ्रॉम HEC. सो आफ्टर यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम HEC, उसके बाद आप लोगों का HEC से कांटेक्ट फॉर अ फ्यू मे बी फॉर कपल ऑफ डेज आप लोगों का HEC से कोई कांटेक्ट नहीं होगा. एंड आफ्टर दैट आप लोगों से TPF कांटेक्ट करेगा. ठीक है, TPF क्या करेगा कि आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, बुदापेस्ट में जितनी भी या डेब्रेसन जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है, वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपको कांटेक्ट वो किस लिए करेंगी कि आपको वो टेस्ट डेट बताएंगी. कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों से एग्ज़ाम लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों से स्काइप इंटरव्यू लेती हैं. जैसा कि BME जो यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों से एग्ज़ाम लेती है जो कि ऑनलाइन होता है, और डेविसन यूनिवर्सिटी आप लोगों से एग्ज़ाम लेती है जो कि वहीं पे किसी होटल में होता है. ठीक हो गया. एंड देन कुछ यूनिवर्सिटीज़ सैगिद LTE यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों से सिर्फ स्काइप इंटरव्यू लेती हैं. तो वो ये जब प्रोसेस हो जाएगा और इसमें लेट्स सपोज आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं, तो तीनों यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को मेल भेजेंगी और टाइम बताएंगी कि इस टाइम. एंड गाइज, अगर आप लोग मुझे कोई भी सुन नहीं सकता तो प्लीज़ राइट मी. ओके, आई कैन नॉट सी, सो टेल मी. ओके, okay, I will tell what type of exams and everything. Just let me speak. एग्जाम्स और स्काइप इंटरव्यूज होने के बाद आप लोगों से, अगर आपने 3 यूनिवर्सिटीज, इस दफ़ा आप लोग 2 यूनिवर्सिटी ले सकते थे, तो 2 यूनिवर्सिटीज आप लोगों को स्काइप इंटरव्यू और एग्जाम के लिए इनवाइट करेंगी. आपने उस टाइम डेट पे एग्जाम देना है. एग्जाम हो गया. एग्जाम होने के बाद कुछ डेज में आप लोगों को यूनिवर्सिटीज आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगी कि आपने टेस्ट पास कर लिया है या नहीं कर लिया. ठीक है, वो टेस्ट का आप लोगों को पता चल जाएगा. अगर लेट्स सपोज आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करती तो आप लोगों को सेकंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी. ठीक है, अगर आप लोगों का मतलब एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड का अच्छा हो गया, तो सेकंड यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी. तो एनीवेज ये सब आप लोगों को शो हो जाएगा TPF के पोर्टल पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट किया है और कौन सी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. ये एक्सेप्टेंस होने के बाद आप लोगों को जो TPF है वो आप लोगों को भेजेगा स्कॉलरशिप ऑफर. ठीक है, स्कॉलरशिप ऑफर आप लोगों को रिसीव हो जाएगी और कि आप ये स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं. और TPF पोर्टल में ही आप लोगों को शो हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही. ठीक है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करती है तो वो आप लोगों को बता देगी. प्लीज़ आई एम रिसीविंग मैसेजेस के मेरे टेस्ट में स्कोर इतने हैं तो मुझे मेरा एडमिशन होगा या नहीं, तो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर. ये प्रोसेस होने के बाद जब आपको स्कॉलरशिप लेटर मिल जाएगा, ठीक है, आप लेट्स सपोज आपने 2 यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट ने आपको रिजेक्ट किया, सेकंड ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, इट विल शो अप इन द पोर्टल. आपने वहाँ पे उनको कहना है कि यस आई विल एक्सेप्ट और आई एक्सेप्ट दिस स्कॉलरशिप. ये होने के बाद आप लोगों को HEC कांटेक्ट करेगी. ठीक है, HEC जो कांटेक्ट, तो ये जो टाइम स्पैन होगा इसमें आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन मस्ट करा लेनी है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन मस्ट करानी है क्योंकि आप लोगों को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो HEC और TPF डोंट केयर कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है या समथिंग लाइक दिस. तो आप लोगों ने ये चीज़ टाइम पे करानी है. और ये होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करा ली. और डॉक्यूमेंट्स कहाँ-कहाँ से टेस्ट करने हैं? डॉक्यूमेंट्स आपने रेलेवेंट बोर्ड से, अगर आप FSC होल्डर, अगर आपने FSC की हुई है तो आप अपने बोर्ड से उसको टेस्ट कराएँगे. बोर्ड के बाद आप IBCC से टेस्ट कराएँगे और IBCC के बाद आप मोफा से टेस्ट कराएँगे. ये 3 मैं रिपीट कर देता हूँ, बोर्ड, IBCC और मोफा.
और जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें बैचलर्स की डिग्री आप लोगों ने HEC, IBCC और मोफा से, ठीक है। और ये जब हो जाएगा, इतने में आप लोगों को HEC कांटेक्ट करेगा। HEC आप लोगों को आप लोगों से तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें ऑफिस देने आए। तो यहाँ पे इस स्टेप के लिए आपने ऑफिस जाना है और वो ऑफिस में आप लोगों को आपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या ये और इस सब में आप लोगों ने बनवा लेना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री फ्रॉम नादरा और बर्थ सर्टिफिकेट। ये चीज़ें बिलीव मी मुश्किल हो जाती हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई थी बनवाना। तो प्लीज़ ये लोग आप मतलब जो HEC से नॉमिनेट हो जाएंगे उनके 97% चांसेस हैं कि वो उनको उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपने डॉक्यूमेंट सारे, खैर आप परेशान ना हो क्योंकि वो आप लोगों को बहुत ही क्लियर लिस्ट भेजते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स उनको लिस्ट होगी, उसमें तमाम मेंशन होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और जो फैमिली ट्री फ्रॉम नादरा और ये सब चीज़ें आपको मेंशन होंगी। और इसमें यहाँ पे वो आप लोगों से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट करेंगे और अटेस्टेड अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं तो दे वॉन्ट एक्सेप्ट। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने प्लीज़ इनको टाइम पे अटेस्ट करा लेना है। जब आप ये TPF आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक्ड होंगे, जब आप एग्जाम्स टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टाइम में आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा लेने हैं। ये होने के बाद जब HEC आप लोगों को तब तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी उसमें वो आप लोगों से साथ स्कॉलरशिप लेटर भी मांगेगी कि आप लोगों को जो स्कॉलरशिप लेटर रिसीव हुआ है फ्रॉम TPF वो भी हमें सेंड करें। और एट द सेम टाइम वो एडमिशन लेटर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वहाँ की जो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया है वो भी हमें सेंड करें। तो कुछ यूनिवर्सिटी हमारी दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ था कि BME को उसको एडमिशन लेटर्स बहुत लेट रिसीव हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा, इवन कि मैं भी परेशान था कि अब मेरे पास लेटर है ही नहीं तो मैं क्या प्रोवाइड करूँ। लेकिन HEC इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करता, आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि मेरे पास लेटर नहीं है, तो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ, तो दे विल गिव यू टाइम। और एट द सेम टाइम आप लोगों को वो स्कॉलरशिप ये जो एग्रीमेंट बॉन्ड होता है ये भी आप लोगों ने बनवाना होता है। ये आप लोगों को HEC पैटर्न भेज देता है, आप लोगों ने सिर्फ उसको प्रिंट करा के और जो स्टाम्प पेपर होते हैं आप लोगों को मिल जाते हैं। खैर ये आप लोगों को पता ही होगा कि बॉन्ड्स आप कहाँ से बनवाते हैं। आपको वो तमाम कह लें कि पॉइंट्स मेंशन होंगे, आपने वो पॉइंट्स प्रिंट कराने हैं और वो स्टाम्प पेपर आई थिंक 100 रुपीज़ वाला जो होता है उस पर आप लोगों ने प्रिंट करा लेने। ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोगों को वो देते हैं ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज। मुझे रिसीव हुए थे ये 27 जून ये लिस्ट रिसीव हुई थी डॉक्यूमेंट्स की, और 9 जुलाई उसकी डेडलाइन थी। ठीक है, ये आपको 10 to 12 डेज हैं आप लोगों को ये सब सबमिट करने के। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं सबमिट कर सकते तो दे विल गिव यू टाइम, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसमें देर नहीं। और अगर इस टाइम आप कहेंगे कि आप मैंने डिग्री से टेस्ट करानी है तो ये पॉसिबल नहीं है, इतने टाइम में डिग्री से टेस्ट नहीं होती, आपको अच्छा खासा इन सिंपल वर्ड्स ख्वार होना पड़ता है बोर्ड्स, IBCC और फिर मोफा। और फिर अभी है भी कोविड सिचुएशन, तो इसमें आई डोंट नो कि क्या प्रोसीजर चल रहा है पाकिस्तान में अटेस्टेशन का। ये हो गया जो मतलब मेन पॉइंट्स हो गए। ये जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो फिर आप लोगों को HEC वेरिफिकेशन देगा कि ठीक है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, और ये आप करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप HEC के ऑफिस देने जाएंगे। ठीक है, हमारी दफ़ा ये था, अब कोविड की वजह से क्या चेंज हुआ आई डोंट नो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब आप देने जाएंगे तो वहीं पे HEC आप लोगों को कहेगा कि अब आप जाके वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आप एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी में जाके आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को वीज़ा रिसीव हो जाएगा। ये कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिग्री अटेस्टेशन, डिग्रीज अपनी अटेस्ट करा लें ऑन टाइम, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपके स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम भी है या आप नहीं जा पाते तो डिग्रीज अटेस्टेशन हमेशा काम आती है। आप जहाँ भी जिस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो आप लोगों से वो अटेस्टेड डिग्रीज ही की डिमांड करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग डिग्रीज अटेस्ट ज़रूर करवा लें, ठीक है, ऑन टाइम। तो ये सब जो बेसिक स्टेप्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिए। और मैं एक और पॉइंट भी ये कवर कर देता हूँ कि आप लोगों को कि कुछ को मेन क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर देता हूँ कि मेरे इतने नंबर्स हैं हेड टेस्ट में तो मेरी सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो उसका जनरल आंसर ये है कि इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं।
क्योंकि अगर आपने किसी फील्ड जिस फील्ड में अप्लाई किया है, लेट्स सपोज उन्होंने वहाँ से 20 स्टूडेंट्स लेने हैं और 20 स्टूडेंट्स के ऑलरेडी आपसे ज़्यादा नंबर हैं, तो ऑब्वियसली उनको वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी कोई फील्ड है, चाहे आपके 55 या 50 पॉइंट्स भी हैं हेड टेस्ट में, और आपकी फील्ड में इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तो वो ऑब्वियसली आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और कोटा सिस्टम क्या है? कोटा सिस्टम किसी को भी नहीं पता कि HEC कितने स्टूडेंट्स कराची से लेता है या पंजाब से लेता है, नो वन नोज। और इतना सबको पता है कि आप लोगों को 125 बैचलर्स के लिए जाते हैं, और 50 मास्टर्स के लिए जाते हैं, और 25 PhD के लिए जाते हैं। और ये है जो ओवरऑल, तो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी फील्ड में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर सकता हूँ विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। और प्लीज़ डोंट आस्क कि मेरे इतने पॉइंट्स हैं तो मेरा एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ पे होती हैं, आप लोगों के प्रोग्राम में कितने अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अपना भी बता देता हूँ, तो आप लोगों को अपना आइडिया हो जाए। मेरे हेड टेस्ट थे, आई थिंक 76 या 77 पॉइंट्स थे, और मेरी जो मैट्रिक है वो 94% थी, और जो FSC थी वो 87% थी। तो मेरी खैर जो मेरा मेजर था वो काफ़ी कम्पिटिटिव था, क्योंकि बहुत आवाम ने अप्लाई किया हुआ था, वो थी सिविल इंजीनियरिंग BME में। तो खैर मेरा एडमिशन हो गया था इजीली, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही मुझे एडमिशन मिल गया था। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू आंसर। मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ, और होपफुली कि मोस्टली क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिल गए हैं। डिग्री अटेस्टेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और वेयर लिस्ट टू बी डिस्प्लेड, अच्छा आई थिंक, एक सेकंड, मुझे वन नॉमिनेशन लिस्ट टुमारो, या होपफुली, क्योंकि हम मेरा टेस्ट हुआ था 4 मार्च, और नॉमिनेशंस जो ऑफिशियली रिसीव हो गई थी वो 27 मार्च, सो विद इन 20 डेज हमें रिसीव हो गई थी। और नॉमिनेशन लिस्ट कहाँ रिसीव होगी? आप लोगों को ईमेल आ जाएगी कि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा कि आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। व्हाट एल्स? अच्छा, प्लीज व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्स डिड द हंगेरियन स्कॉलरशिप यूज टू डू? ओके, हंगेरियन एग्जाम्स का मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपका ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ। अच्छा, वेयर लिस्ट टू बी डिस्प्लेड, आई टोल्ड यू, यू विल गेट द ईमेल। 55 इन हेड टेस्ट, तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्या फील्ड है। 25 स्टूडेंट्स में अगर आप ज़्यादा लड़के नहीं हैं आपकी फील्ड में, और अगर उन्होंने 1 या 2 सीट्स देनी है, तो यू हैव चांसेस कि आप लोग को मिल जाए। व्हाट एल्स? Can we apply for master scholarship during BS last semester, or we can apply in any other country during BS? For Hungarian you cannot apply, but for Turkey Burslari आप apply कर सकते हैं, but वो deadline is over. I told you many times in my videos. I've been sent to my teachers. I'm from Gilgit. Can I have science for selection? Yeah, I told you it depends. Like sociology is not a competitive field, or I think you have higher chances. But really, yeah, I told you it depends. Or what about students on waiting list? To be honest, students on waiting list don't have higher chances, because the reason is कि आपको वेटिंग लिस्ट में तभी इंटरटेन किया जाता है जब आप लोग वो सीट, कोई भी स्टूडेंट वो सीट छोड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं एंड पे रिजेक्ट करता हूँ स्कॉलरशिप की, मैं नहीं जाना चाहता स्कॉलरशिप पे, देन इन दैट केस आप लोगों को वो वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है, ठीक हो गया। ये आंसर हो गया इस बात का। और आई हैव 61% इन कॉमर्स, आई एम एलिजिबल टू, आई थिंक इट्स 61%, आई डोंट नो, बट आई थिंक द रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट 70%. Okay, what else? What about students on? I told what your percentage in metric? What are your percentage in HGC? I told you already. Please, if you, anyways, my percentage was in test was 77 points and 94% metric, 87% FSC, and I got selected in most competitive field because civil engineering के लिए उस time यहाँ पे मेरे ख्याल में 25 to 30 students आए थे. And one thing, ओके, सो इट रियली, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनके इतने हाई मार्क्स नहीं है, बट दे गॉट सिलेक्टेड. द रीजन इज इन देयर मेजर्स, नॉट मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइड. सो आई मीन इट रियली डिपेंड्स. सो
Yeah, about Hungarian exams. Yes, FSC certificate is necessary. And for Hungarian exams, तो to be honest, for BME it was really hard. और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा कि easy होता है exam. For Hungarian universities, test won't be so easy. I don't know about HEC के HEC का test कैसा था, but I would recommend you कि आप लोग उसके लिए थोड़ी तैयारी कीजिएगा जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेती हैं, क्योंकि मुझे अपने चांसेस नहीं थे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा बीएमई के लिए, क्योंकि टेस्ट बहुत मुश्किल था, बट आई गॉट सिलेक्टेड, बट इट वाज क्वाइट हार्ड। डेब्रिसन का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ का वो किसी होटल में हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, और आई डोंट नो मैरियट होटल, और आई डोंट नो। तो वहाँ पे आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है रिटर्न। ये हुआ था 2018 में, ठीक है। तो अभी क्या होता है आई डोंट नो, बट ये कुछ ना कुछ आप लोगों से कोई ना कोई टेस्ट जरूर लेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आप लोगों से स्काइप इंटरव्यू ले लेती हैं, तो स्काइप इंटरव्यू में तो मेनली मोटिवेशनल ही चेक की जाती है। आई डोंट थिंक सो के दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इज़ नॉट समथिंग हार्ड आई वुड से, बट अगर आपका एग्जाम होता है या कोई टेस्ट होता है तो इट वॉन्ट बी सो ईजी। आई डोंट नो अबाउट हैक टेस्ट, बट जो हमारी दफ़ा था हैक टेस्ट से आई वुड से कि 80% वो टेस्ट जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने लिया था वो मुश्किल था। मैंने सिर्फ बीएमई का दिया था, आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़। How many students are selected from Greater Pakistan in sociology? No one knows. I told you these HEC's criteria. No one knows कि कितने. We only know कि 125 students for bachelors and 25 for mass, 25 for PhD, 50 for masters. Some interview tips besides general questions. Interview tips is like I recently made a video maybe 2 or 3 days ago about um, टर्की बुर्सलारी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो उसमें मैंने आप लोगों को मेन टिप्स यही दी हैं कि उनको मेन इस चीज़ पे कन्विंस करो कि यार हम लोग वापस आएंगे, वी रियली वांट टू सर्व आवर कंट्री, एंड प्लीज एक्सप्लेन कि why you chose this program. Okay, and by the way, it's a bit okay, lengthy topic, so I would recommend you to check my recently uploaded video about Turkey Burslari interview experience. तो वो जो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें वही यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि इंटरव्यू वुड बी somehow similar for all the scholarships, because I mentioned those points जो तमाम इंटरनेशनल scholarships में जिन पे फोकस किया जाता है। Okay, what else? What was your asset? It was 2018. I am student of 2018 session. Okay, which aspect decide more? Is it FSC marks, letter of intent? No, I told you these things doesn't matter in Stipendium Hungaricum. 50% your FSC, 50% metric, and 50%, 25% FSC, 25% metric, and 50% HEC test. Okay. एंड देन द हंगेरियन यूनिवर्सिटीज एग्जाम, इट डिपेंड्स कि आपको वो एडमिशन देंगे या नहीं। वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि आपने हेट में स्कोर क्या है या आपका मैट्रिक एफएससी में स्कोर क्या है, वो उनका एक एडमिशन टेस्ट होता है। तो या दैट्स इट। Apologies for the question being unrelated, but the Turkish study says awaiting affiliation on 23rd. Does it mean it's submitted? Yes, it is submitted. Don't worry. How many maximum seats available for each program? I told you, no one knows. No one knows except HEC. क्योंकि जब हम आ रहे थे तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम हमें भी पता चले कि कौन से प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स हैं, कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं, बट नो दे डिडंट टेल अस। Oh, thank you, Asanjay sir. Thank you. I have improved my FSC. Can I get FSC certificate urgently from board office? Yeah, you should try. You can try. You can always try. आप जाएं, आप उनको सिचुएशन बताएं, they are humans and they can understand your situation, तो आप लोगों को मे भी वो लोग प्रोवाइड कर दें। What else? It's Sham Khan. When nominated students be uploaded? Maybe in couple of days, because I again saying for me it was 4th of March and I got my nomination email on 27th of March. So probably in 20 days for me. Please give any information about Romanian government. Oh, for Romanian government scholarship, I have no idea, but I will make a video soon, hopefully. Hi, what is the last date of submission? Submission for what? It's already over. The submission date was I don't remember. I think 15th January probably. Assalamu alaikum, bro. Why you leave Burslari? I left Burslari because I didn't want to waste my 1 year for learning Turkish language.
And I also explained other reasons, because here you get Schengen visa where you can travel like all the European countries, but in case of Turkey Burslari, you can only stay in Turkey. I mean, these are not something very important, but still. And the main reason was this my university, क्योंकि मैं BME में आना चाहता था, तो BME में admission हो गया, then I chose Stipendium Hungaricum. What else? Okay, thanks. I'm benefit from your. You are welcome. Okay, thank you so much, Srinagar, Kashmir. Okay, so I'm waiting if someone else have. And about Hungarian exams are important, Hungarian universities exams, but I will try my best to get some questions from university also, or from my, you know, from friends, or I don't know. But I will try my best कि आप लोगों के लिए मैं कुछ questions ले सकूं. And then I will upload somewhere. I don't know where you are following me. I have Insta, I have Facebook, so probably I will give you somehow. Why HEC doesn't display whole merit list each year? We don't know. Every time students request for this, but they didn't. I don't think so. They will publish this year also. What अब कौन सी country में हो? I am in Hungary. I am a Stipendium Hungaricum student right now. But I was explaining Turkey Bursari because मैं दोनों के लिए selected था, मुझे दोनों के award letters receive हुए थे, but I decided to go for Stipendium Hungaricum. But I could go to Turkey. I mean, I had nothing else to do. I just had to apply for visa, but I didn't. GRE have any yeah, it depends. GRE, maybe the Hungarian universities will give you a little benefit, but from your, I don't know, from India and Pakistan it doesn't matter, because आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो आप लोगों के हेड टेस्ट पे और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे होता है. Is there any requirement of CGPA for applying master's degree? Yeah, it was. I think I don't remember. Sorry, many things. Anyways, it was, I think, 75% or 70%. You can check it on online. What are the difficulties faced by students after arrive there? No difficulties. Don't worry. Now, when we came, there are hardly 5 or 10 students in Hungary. Students. So we had some basic problems and like finding accommodation, but now don't worry, we have many organization means communities and groups, so we will help you. Don't worry about this. Some two exams for bachelor from Kashmir, any chance? Maybe, yeah, it's a good aggregate. And अपने हालात बदल जाए जिस बात दिए एकदम से वक्त बदल दिया. I don't know what. I think there is something fishy behind not display whole list. Oh yeah, maybe. I don't know. Why are you studying bachelor's? I'm studying bachelor's. It's my sixth semester now. I'm gonna graduate soon. How to apply for Hungary scholarship, brother? Sorry, the deadline is over. You can apply next year. It gives you almost 3 months to apply. And yeah, what are the steps selection after the head test? Yeah, I explained all the steps for selection after head test. Please go check the session from the very beginning. In the very beginning of session, I explained what's the procedure after the head test. May you please tell about Turkey Bushari PhD selection procedure criteria also applied? Yeah, brother, I don't actually. I told you the criteria for Turkey Buslari many times, that you will have an interview, okay, and after that, they will let you know you got selected or not. Because for me, I just had an interview and no written exam, nothing. But yeah, in interview, what types of questions they asked me, I recently uploaded a video on my YouTube channel. You can go check it. I explained what type of questions they asked me. And again, all the basic steps, what you have to do after HEC test, I explained in the very beginning of live session. And the important is degree attestation. Azerbaijan scholarship better than Turkish scholarship? No, no, for sure not. Azerbaijan scholarship is new, and there are not so many high-ranked universities. And I won't recommend Azerbaijan scholarship, but still, Azerbaijan scholarship for Pakistani students is just one seat for master students, one seat for PhD students. So it's I won't recommend to apply for one seat, because maybe 100 students applied and they will select just one student.
Any other questions? Okay, I will end my live session in 30 minutes, hopefully. And if you didn't listen what I explained in the very beginning, then please check the session from the very beginning. I explained all the steps what you have to do after HEC test. No, IELTS is not mandatory. How to check Hungarian unis are recognized from HEC. It's you don't need to check this because the PEC problem is only for engineers, and this year no engineer can come and study in Hungarian universities. So for us, it's something important. For you guys, so it's irrelevant. More questions? And again, for Hungarian examinations, I will try to find some material and provide you. And yeah, I will put my Insta link below this video, and you can go and check out. I will provide you the exams and all this stuff on my Instagram because Facebook is already too much crowded for me. So I will try to put on Instagram. I've seen all of your views, sir. Thanks for your support. So I have many national sports award for publications. Do you think this will have some weight? Yeah, for sure. For Turkey Buslari, it matters a lot because your nomination will highly depend on interview. And during the interview, you will explain them. You will tell them all your publications and this. Then they will give you more points. The more points you have in your interview, the more chances you have. Does higher IELTS have any benefit, or six or more is sufficient? Thanks for your. No, actually, IELTS has nothing to do for Pakistani students for Stipendium Hungaricum. Do you know what's the total number of seats? No one knows the number of seats. Only HEC knows. Is there some chances to apply for scholarship in a master's having GP less than 3? You should check the requirements. I explained all the requirements in my uh, videos, but now you can also check on Google requirement for Turkey Stipendium Hungaricum. It will show. I think it was 75% or 70% for Turkey Burslari and for Stipendium Hungaricum. For Pakistani government now 16 years for Kashmir. How can we apply? I don't know what type of scholarships they announced. Sorry, but I really don't know. And I just know about Stipendium Hungaricum and Turkey Burslari. I have no idea about other scholarships. It's okay if you're not from Pakistan, then if you are from India or some other country, then it really depends on the criteria what your country is following. But I would recommend to. I said I will try my best to provide you the exams and this stuff about Hungarian universities. That is important for you. 2 years bond. Can you please elaborate it? Yeah, the bond is it's not 2 years bond. It's the bond. Yeah, it's sorry, it's 2 years. So it's officially that you have to serve your country after graduating from uh, from Hungarian universities. For Turkey Buslari, no bond or anything because HEC has nothing to do with that. But for Stipendium Hungaricum, even I signed a bond that after graduating, I will serve my country for 2 years. Okay, so this is the bond. If you want serve your country, then you have to pay 2 million. Yeah. So I don't forgot to. Is Hungarian scholarship depends on the number of applicants depends from your area to same field. Yeah, this is what I said that if 30 students in civil engineering applied from Pakistan, let's suppose there is no engineering this year, let's suppose applied for BS physics, and 20 of them they want to select 20, so they will select the 20 students with higher points. How many students will they got selected for Turkey study? No, for Turkey scholarship, no idea how many students they select. They mention nowhere. So can you please a bit about oral exam for physics in University of Pet? Yeah, oral exam would be, I mean, you must know at least your
higher school stuff. I can only say this, but check the video that I made for interview experience about Turkey Burslari, because in that I explained how the oral exam or interview goes uh, for scholarship students. Hungary scholarship. What is the upper age limit for Hungary scholarship? I don't remember the upper limit. Sorry, bro, but you can check it. And upper limit is I think 30 years and 25 years. 30 for I think Turkey Buslari and 25 for Stipendium Hungaricum. But you need to check. I really don't remember. When is the final medal expected by C? In couple of days. Um, no, there is no other way, I would say. But yeah, I mean, if you really, maybe you will get selected for interview, then until that time, you must have IELTS or TOEFL. So prepare for the exams, go for the exam. This is what I can recommend you. Okay, I have applied for Turkey scholarship, but don't receive any message. No, don't worry if you haven't received any message. What is the final message? I answered, thank you. Means bond period starts from date of arrival back in Pakistan or date of starting government job. Yeah, this is confusing, but I think, but I think they told us uh, after you got the job in Pakistan, you will inform the HEC, and then your bond period starts. With how many days HEC send email for nomination after result? I told you within 20 days or 23, 5 days. I don't know Duolingo or accepted or not, because they clearly mention in their requirements what type of results or what type of exams they accept. So, I mean, you need to check. Um, Please make videos for other scholarships programs. Please, we require. Yeah, I will try. Until now, I made about study in Italy, Germany, and yeah, Germany, Italy, and soon I'll make about that scholarship, Germany, and yeah, Turkey and Hungary. I already provided all the stuff. Okay. Uh, yeah, so I think this is enough for today's live session. And if you will have any question, you can ask me on Instagram. The link is given in the description. But please don't ask irrelevant questions. I have a lot to do and other things. Many students asking me questions. So if you have something logical to ask, you can ask for sure. Okay, I will make a video about this GIST scholarship. Okay, I will look over for it. I already made a video about Azerbaijan scholarship maybe 2 months ago, but the Azerbaijan scholarship is not good because only you cannot apply for bachelor's, and only one student for PhD and one student for masters is will be accepted. So I think it's a waste of time. Yeah, it matters, but because the Hungarian universities only cares if you get selected by your sending partner or not. If you are not selected by HEC, then doesn't matter how many scores or academic background you have, then it's useless. If you are nominated by the HEC, then you have higher chances that you will be selected for this scholarship. No, seventh semester students cannot apply, and even you cannot apply now because the deadline is over. HEC provide air ticket. Yes, HEC provides air ticket just for one way. Okay, so this is the last limit I have to leave the live session, and 3 more minutes at 40, I must need to leave the live session. So if you have, yeah, I told you, please listen from the very beginning of this live session after I leave it, because I explained what is your criteria for selection. Can HEC or foreign universities make any issue if we don't have complete our BS degree in 8th semester?
No, you won't be selected if you are in your if you are not graduated yet by HEC. Hungarian universities have no problem, but for HEC they won't select you. And yeah, that's it. So in 3 minutes I'm gonna leave. So still, if you have question, you can ask me. And as I said about the Hungarian universities exams, I will try to provide you on my Instagram account, and the account is given in the description. Uh, Brother, I have no idea which scholarship because I mean there are a lot of scholarships for Kashmiri students, and yeah, you can always apply for a stipendium in Turkey. And there are actually these days many scholarships, but that you must have look for it because these two are the easiest scholarship. Stipendium and Turkey Bursary. Easy mean you don't need to struggle too much. You just apply and you get your results. But in other scholarships, you have to struggle a lot. Yeah, it's fully funded. It's completely fully funded. They give you everything. Don't worry about any BS degree 4 to 5 years में complete हो तो कोई issue होगा master. No worries about this because I have a gap year, so no worries. Yeah, you will find halal food. Okay. So 1 minute remaining, and if your friends or someone missed this session, so you will find this live session on my YouTube channel in the playlist of live session for Stipendium Hungaricum, and you can recommend your friends. Yeah, mosques are. You will find mosques in Hungary. You are welcome. So at 40, I will leave. Hopefully, this session will be helpful for you guys. And if you will have any question, you can write me in my on my Insta account. But please try to ask logical questions. I will answer for sure.